આપણે સૌ ના વિચારી શકીએ એવી વિમાન દુર્ઘટના આપણે સૌએ જોઈને એમાં આપણા નાગરિકો, આપણા પરિવારજનો ને આપણે સૌએ ખોયા. એમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ હોય, ક્યાંય જામનગર ખાતે પણ એવા બે પરિવારો, એટલે શૈલેષભાઈ પરમાર ને એમના પત્ની ધર્મપત્ની નેહલબેન પરમાર, જેઓ લંડન વતની હતા અને લંડન પાછા જતા હતા. સાથે રિદ્ધિબેન અને એમના સુપુત્ર 4 વર્ષનો એમનો દીકરો શ્રેયાંશ ભાણવડના વતની હતા અને તે પણ યુકે વતની હોય અને પાછા જતા હતા. આ તમામને આપણે આ વિમાન દુર્ઘટનામાં ખોયા છે. ત્યારે આ બંને પરિવારોમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને બધા જ આ આખી ઘટનાથી દરેક વ્યક્તિ મને લાગે છે આટલું જ દુઃખદ છે, એટલું જ શોકમાં છે. એટલે રિદ્ધિબેનના અંતિમ સંસ્કાર પરમ દિવસે એમના મોર્ટલ રિમેન્સ એમના અને એમના સુપુત્રના આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને ભાણવડ ખાતે કરવામાં આવ્યા. આજે શૈલેષભાઈ અને નેહલબેન ના જે મોર્ટલ રિમેન્સ હતા એને એફએસએલના માધ્યમથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને આજે એમના અહીંયા નિવાસસ્થાનથી એમના પરિવારજનો અને જામનગર શહેરના સર્વે નાગરિકો દ્વારા એમને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી. બસ ઈશ્વરના ચરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના કે પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે અને નેહલબેન, શૈલેષભાઈની આત્માને, રિદ્ધિબેનની आत्माને ईश्वर सदगति आपे। चलो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम जितेंद्र दत्तानी है। जो अभी ये 12 तारीख को जो ये हादसा हुआ, विमान हादसा, उसमें हमारे प्रियजन शैलेश कुमार गोविंद जी परमार तथा नेहलबेन शैलेश भाई परमार दोनों का आकस्मिक मृत्यु हुआ है। हम सब इसी शोक में थे जब हमें ये न्यूज़ मिला, तो हमें कुछ मालूम नहीं है। हम तुरंत अहमदाबाद पहुंचने के लिए निकल गए थे। वहाँ जाके हमें मालूम पड़ा कि इतना दर्दनाक हादसा है कि वहाँ कोई किसी की बॉडी है या नहीं है, कोई जिंदा है या नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है। 4 दिन के बाद कल रात को हमें हमारे जो डीएनए टेस्ट हमने दिए थे, मेरे ससुर जी और हमारी नेहल बहन थे, उनके सिस्टर के डीएनए मैच हो गए। हमें तुरंत सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से कॉल आया और हम लोग तुरंत वहाँ गए और पार्थिव देह को हम जामनगर लेने के लिए पहुँच गए। ये सभी वाकया हुआ उस दौरान पूरे सरकारी तंत्र, जैसे कि हमारे माननीय सांसद श्री पूनमबेन माडम जी, उन्होंने कल रात को 2:30 बजे फ़ोन उठा के जो हमारा फोरेंसिक रिपोर्ट था उसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था, क्योंकि नाम में गलत हो चुका था। तो बेन श्री ने रात को 2:30 बजे भी फ़ोन करके हमें बताया कि आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने फ़ोन किया और तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही हुई और हमें तुरंत नाम जो था उसमें करेक्शन करके, और बेन श्री ने वो भी आश्वासन दिया कि मैं पूरी रात पर जागूंगी, जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ हूँ, आपके दुख में सहभागी हूँ। साथों साथ ये सब जितनी भी प्रक्रिया हुई है, जो पूरा गवर्नमेंट में पूरा श्रेय दूंगा हमारे माननीय मोदी जी, माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पटेल साहब और पूरे सरकारी तंत्र, और स्पेशली जामनगर के हमारे कलेक्टर साहब केतन भाई ठक्कर, मामलतदार साहब हमारे साथ हसमुख भाई दलवाड़ी, पुलिस टीम, इवन अहमदाबाद में पूरा जो स्वयंसेवक बोलते हैं वो पूरा आरएसएस, और जो मानवता का रूप है ना, वहाँ हमने हमारे आंखों से देखा है। इतनी इन लोगों ने हमारी मदद की है। जब कल रात को हम यहाँ निकले तभी इतनी बारिश हो रही थी, इतना स्टाफ था, पूरे स्टाफ ने इतना सहयोग दिया कि इतनी बारिश में भी उन लोगों ने हमें अपना छाता लेके हमें कार तक पहुंचाया, साथ में पानी की बोतल दी, साथ में नाश्ता दिया और साथ में एक पुलिस वान हमारे साथ अहमदाबाद से जामनगर तक एस्कॉर्टिंग करके आई और हमें यहाँ तक हमारे पार्थिव देव दोनों हमारे स्वजन जो हमने खो दिए हैं उनकी अंतिम क्रिया के लिए हमने यहाँ पहुँचा दिया। अभी हम लोग अंतिम क्रिया शुरू कर रहे हैं। तो धन्यवाद। और पूरे मीडिया कर्मचारी और पूरे सोशल मीडिया, जिन लोगों ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की, न्यूज़पेपर में दिया, वीडियो भी अपलोड किए, जो हमारे यहाँ से चल बसे हैं, जो भगवान के पास, हरि के पास पहुँच चुके हैं, तो उनका एक ही मकसद था कि हरि नाम लीजिए
तो आप सबने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी देखा है कि हरि नाम कोई हमारे डॉक्टर साहब है उन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया में। तो जो प्रिय जन हमने गुमाए हैं तो उनका एक ही काम था कि हरि का नाम लो और उसके चरण में प्रभु को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको शांति मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। અમદાવાદ ખાતે પ્લેન દુર્ઘટના બની એમાં જામનગરના પણ કહી શકાય એવા બે નાગરિકો એનઆરઆઈ નાગરિકો પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા છે. એમનો પરિવાર અહીં જામનગર ખાતે શૈલેષભાઈ પરમાર અને ડૉક્ટર કેયુર બક્ષી બંને આ પરિવારના સાથે જોડાયેલા હતા અને આજે આવી પરિસ્થિતિમાં આવી દુઃખદ જે ઘટના બની છે અને એના કારણે જે શોકનો માહોલ છે અને બધા જ લોકો આ પરિવાર સાથે અમે બધા જ એના દુઃખમાં સહભાગી થયા છીએ અને આજરોજ એમની અહીંથી અંતિમ યાત્રા છે. આ અંતિમ યાત્રામાં અમે બધા જ આ વિસ્તારના અમે કોર્પોરેટરશ્રીઓ આગેવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો આમાં જોડાયા છીએ અને આ પરિવારની સાથેની સંવેદનામાં પણ અમે એમની સાથે આજે આ દુઃખની ઘડીમાં ઊભા છીએ.